सिटी तो बजाओ यार, विदेश सिटी बजाओ। आपके बारे में क्या बोलना चाहते ये साले आतंकवादी सब बैठ गए। इनसे नहीं होगा। सर आप कह रहे हैं हमारा वोट आपके साथ है सर। अरे जीतेगा भाई जीतेगा। ले, ले, ले। नीतीश एक खुला फोड़ रहा है खाली बैठ के। अभी बचपन सर वो आपका कैंडिडेट है सर। हमारी पार्टी मैं सोचता हूँ आदमी को जब बेईमान होने पे इतनी इज्जत मिलती है, बेईमान ही सही। आदमी अगर ईमानदार हो जाए नहीं, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और पढ़ाने तो मैं कभी आता नहीं था, ये तो समझ with the intention to teach. This is what Ravindran Sir says to me. You don't teach anything in the class. I said, sir, correct. But then what you said for 2.5 hours? I said, you sir, come to the class. I said, E is equal to E and all. History, the strength of a nation depends upon the culture of a nation, history of a nation, people, what you call human resource. If human resource is not strong, 1,025 crore people are there in this country. China is trying to enter into America. They are going through a railway line, Shanghai to Seattle. और हम गौरक्षा कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक, ऐसे ऐसे बातों पे हम उलझे हुए इस वक्त। If you see the present condition of the country, असम में अफसा लगा दिया, बंगाल में बरकाती, मौलाना बरकाती says West Bengal is not the part of India. तो योगी जी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं हूँ क्या बेसिकली। किस सुबह सुबह उठ के पुलिस स्टेशन पहुंच जा रहा है, कभी हॉस्पिटल चले जा रहे हैं, कुछ भी करने में। 3 साल से मोदी साहब हैं। नास्ट्राडामस की पहली भविष्यवाणी गलत निकली कि 21st सेंचुरी में बहुत विद्वान आदमी भारत का रूलर होगा। शायद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा था, पब्लिक उसको उल्टा लेके चली गई। बट इन द पास्ट 16 क्लासेस जितना भी मैंने पढ़ाया, मैसेजेस वर इम्पोर्टेंट। ये सब तो ये सब जो स्टोरी है ना, हिस्ट्री एज अ स्टोरी, ये सब गलत। डोंट रिलाई ऑन इट। Tomorrow, if India becomes a communist country, entire story will change. Tomorrow, if India becomes a communist country, entire story. तो फिर पढ़ना क्या था फिर बेसिकली? ये फॉर्मूला E is equal to E. जैसा अगर आपसे उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ वीक नेशन, एक लाइन में बताओ, वन लाइन, तो सिंपली हैव टू से कि ओल्ड ऑर्डर इज स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। बस यहीं पे चुप हो जाना है। जस्ट से वन लाइन, ओल्ड ऑर्डर इज स्ट्रॉन्ग। सामने वाले ने कहा ओल्ड ऑर्डर मतलब फ्यूडलिज्म, देन व्हाट इज द न्यू ऑर्डर? कैपिटलिज्म। अच्छा, व्हाट हैपेंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। जापान में क्या हुआ? मेजी रेस्टोरेशन। चाइना में क्या हुआ? डिक्टेटरशिप ऑफ माओ। यहां ना तो रेवोल्यूशन हुआ ना रेस्टोरेशन हुआ। There is a chance of dictatorship in India. There is a chance. तो ये जो concept है ना कि when you are writing about Napoleon, so you write the first line first. Only one line you have to put in block. First line. If you get the question कि Napoleon proved to be a meteoroid, sparked and went off. This question is a possibility. He was a meteoroid, sparked and went off. So first line you will write कि the rulers who don't bother about genuine reforms
are destined or doomed to fail. Inbox. After that, you don't have to underline any line. And this line will give the message to the examiner that you understand the core of the story. You got a question on Russian Revolution, French Revolution. First line you write, the revolutions, whenever 80% population will not be properly engaged by the state. From here I started Russian Revolution, French. Political nuisance will be the natural outcome. Inbox. Sir, first line, what you call preface, introduction. And your introduction explains that what will be the story of the entire answer. पकड़ के जो बैठे This you have to do in everything. तो ये जो मतलब story के पीछे stories है वो important थी. If we would have taken this class academically, then there are different approaches of history. Subaltern history. Sumit Sarkar, if you read, you will find a different picture of Gandhi. When you are reading Vipin Chandra, after the selection, not now. After the selection, you have gone through Vipin Chandra. Then you read Sumit Sarkar. You will find a different perspective of Gandhi. Because Sumit Sarkar has written history from subaltern point of view, communist. A very different picture. Chauri Chaura, why Chauri Chaura incident took place. So Vipin Chandra says that Chauri Chaura was the outcome of the frustration of the common people. And Sumit Sarkar says no. It was the pressure from below. That is the pressure from the farmer community, working community. People were becoming restless. This was the attempt of the working class possibly to take away the leadership from the elite section in India. A very different version of the story. You don't have to engage in all these things. आपको फंसने की जरूरत ही नहीं. आप राजा आप ही हो. Bureaucracy means what? King. आपको सिर्फ ये समझना है कि साहब घटनाएं होती क्यों हैं? What is the reason? China is a strong nation, India is a weak nation, Pakistan as a nation is finished. तो इसके पीछे रीजन. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यू ऑर्डर को समझा ही नहीं. They did not bother about the new order. So personal identities are alive. Shia, Sunni, and all those things. They are also fighting. We are also fighting. This was the important part of the subject. Messages. And I started from here. E is equal to E. Economy is equal to empire. अब तो एकदम clear हो गया होगा ये concept. कहीं भी you must be taking up the story. So first thing you must be bothering about economy. Then geography of a place. So you know very well now that at 0 degree there is no possibility of urbanization. 0 degree equator. There is no possibility of urbanization. Why? Because there can be no infrastructural development at 0 degree. Rainforest. 4 o'clock rain. Every day you have a rain at 0 degree. So it's an equatorial forest. As it is an equatorial forest, there is no possibility of infrastructure. And as there is no possibility of infrastructure, there is no possibility of industrialization. And as there is no infrastructure and industrialization, there will be no state. So 0 degree will always be inhabited by tribals. So if you pick up the question bank of geography, GS, you will find after every 2-3 years, they match the following. On one side the name of the tribes, on the other side the name of the countries. Congo, then Malaysia, Brazil, all the countries which are on 0 degree. Match the following. Because there is no possibility of urbanization. So this was the intention of this 10 months. Correlation. Correlation. Don't take it history as an individual subject. Correlation. Economy, geography, polity, analysis. They want an alive mind. कुछ नहीं ढूंढ रहे वो आपके अंदर. Alive mind. Patience. Hyper patience. If you become impatient, district will immediately come to an end. If doctor becomes up, you go to the hospital, see the condition of the patient. Accident हो गया है, पूरी body फट गई है. But see the behavior of the doctors. The people around them become impatient. But doctor is always calm and quiet. And till the pulse is going on, he has the hope that the person will survive. This you have to do. Correlation, analysis, understanding, keep all the facts in front, then create the story. Don't be biased. Patience. And one of the most important quality of a ruler is you have to smile. हंसना है आप. सर ये तैयारी भी करोगे तो हर एक घंटे के बाद खड़े हो जाया करना रूम में.
हंस रहा है, नाच रहा है। बगल वाले पूछो क्यों, क्या हो गया? अरे 5 दिन से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता। हमेशा लड़ाई दो लोगों में चलती है, या तो इंडिविजुअल में। अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ, दैट इज ऑल्सो वॉर। एंड इफ यू आर डिप्रेस्ड, एनसीईआरटी विल बी हैप्पी। ये देखो, हमें समझ ही नहीं पा रहे। बट व्हेन यू स्टार्ट अप एंड डांस, एनसीईआरटी विल बी डिप्रेस्ड। कौन किसको कितना डिप्रेस करता है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ। So when you go back foot, other person immediately comes in front. एक श्रीलंका का प्लेयर था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, क्योंकि बड़ा अननोन सा प्लेयर है वो आज भी। बट श्रीलंका वन वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, नॉट रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा। ये तो अच्छे प्लेयर्स थे, मार्वन आटापट्टू, दे वर द क्लास प्लेयर्स। द मैन हु यूज्ड टू क्रिएट द थ्रेट इन द अदर साइड वाज कालू वितरना। कालू वितरना, उसका नाम बहुत लोगों को नहीं पता। कालू वितरना, जयसूर्या इज आल्सो अ फेमस प्लेयर, बट कालू वितरना he was sent स्पेसिफिकली, उसको एक बात बता के भेजी जाती थी कि पहली बॉल जब पड़ेगी, you will stand on the half of the pitch। आधी पिच पे जाओगे तुम।